जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। अब इसकी एक स्टेज और हम आगे बढ़ते हुए एक और न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। नाउ चेक कीजिएगा इसे। द क्वेश्चन इज 600 joule of heat was given to a 150 dm cube system containing a gas at 0.25 atm pressure. वेल इस कंडीशन को हम पहले अपने पास ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इस न्यूमेरिकल को हमारे लिए समझना आसान हो सके। सो लेट्स से देयर इज अ सिस्टम, लेट मी ड्रॉ दिस द सिस्टम, और यहाँ पर ये इसका पिस्टन मौजूद है। आपसे कहा गया कि इसको एनर्जी पहुंचाई जा रही है। दिस इज व्हाट इज द क्यू एनर्जी, एंड द क्यू एनर्जी, अब सवाल को देखते हैं, हम समझते हैं। 600 जूल ऑफ हीट वाज गिवन, हीट वाज गिवन यानी हीट पहुंचाई जा रही है इसे, सो यकीनन क्यू वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस। सो दिस इज द प्लस 600 जूल, 600 जूल, ओके। और आपको बताया गया कि टू अ 150 डीएम क्यूब सिस्टम, यानी इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो यहां से यहां तक का जो वॉल्यूम है वो कितना है। दिस इज व्हाट इज 150 डीएम क्यूब, ओके। और इसके बाद आपसे ये कहा गया कंटेनिंग अ गैस एट 0.25 प्रेशर, यानी इस सिस्टम के ऊपर जो प्रेशर मौजूद है, दिस इज व्हाट इज 0.25 atm, ओके। अब आपसे क्या कहा जाता है, द इंटरनल एनर्जी was decreased by 200 जूल। यहाँ पर वर्ड डिक्रीज इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब है कि एनर्जी में कमी आ रही है। और हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि अगर इंक्रीज हो तो प्लस, और अगर डिक्रीज हो तो डेल्टा ई की वैल्यू माइनस होती है। सो द इंटरनल एनर्जी, द डेल्टा ई इज इक्वल्स टू minus 200 joule. You have to consider this, okay. फिर आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। याद रहे कि इस मतलब आपको डेल्टा वी मालूम करने के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि असल में तो आपको ये जो वॉल्यूम गिवन है, दिस इज व्हाट इज द V1। और आपसे कहा जा रहा है कि अब ये पिस्टन अगर मूव करेगा तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम यहाँ से बढ़ जाएगा, और माने कि इस वक्त बढ़ने की सूरत में पिस्टन की पोजीशन यहाँ से यहाँ आ गई, दिस इज द पोजीशन ऑफ द पिस्टन। तो अब ये वॉल्यूम कितना है, सो दिस इज व्हाट इज द V2 जो आपने मालूम करना है, ओके। दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो कंसिडर इस बात कीजिएगा, सब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द यूनिट। हमें ये बात मालूम है कि वॉल्यूम हमें इसमें डीएम क्यूब में नहीं बल्कि मीटर क्यूब में चाहिए, ठीक है। देन हमें ये बात मालूम है कि प्रेशर हमें एटीएम में नहीं बल्कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चाहिए। इसका मतलब हमें इन यूनिट्स को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं तमाम इंफॉर्मेशन के साथ। लेट्स फर्स्ट राइट द डाटा। सबसे पहले आपको Q वैल्यू गिवन है, और हमने ये देखा कि दिस इज द Q इज प्लस 600 जूल, एंड देन सिस्टम के बारे में बताया गया कि सिस्टम का वॉल्यूम कितना है, दिस इज 150 डीएम क्यूब। सो वेल द वॉल्यूम, यानी हम ये बात मालूम है कि ये वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम है, सो दिस इज व्हाट इज द V1, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, this is 150 dm cube, okay।
नो, हम इस डीएम क्यूब को हमें मीटर क्यूब में चेंज करना है। डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में हम चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है व्हाट इज द रिलेशन। द रिलेशन इज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए we have to divide this number by 1000. So हम अगर 1000 डिवाइड करते हैं, so the value is 0.15 meter cube. Let me write this clearly. This is 0.15 meter cube. Now the next thing is about the pressure. Okay, the pressure, इसकी आपको वैल्यू गिवन है 0.25 atm। और वंस अगेन हमें मालूम है कि हमें इस प्रेशर को हमें चेंज करना है किस यूनिट में, दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए हमें ये फिर अगेन एक और फैक्टर हमें मालूम है। वी नो 1 atm is equal to 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ना इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि 1 atm बराबर है 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, तो 0.25 कितना होना चाहिए, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस, यानी 0.25 should be multiplied by 101,300। ओके, सो इसे हम मालूम कर लेते हैं by the calculator. Let me now calculate this. This is 0.25 multiplied by 101,300. Okay, this is what 25,325. This is what is the Newton per meter square. So we have now converted the pressure and the volume as well. Next हम बात करते हैं the internal energy. This is also the part of the data. Internal energy हमें मालूम है यहाँ पर क्योंकि डिक्रीज हो रही है, so this is what is the delta E. इसकी वैल्यू क्या मौजूद है, this is minus, with a minus sign you have to write minus 200 joule. Okay. And finally what you are asked to find out is what is the V2. So we have to calculate the final volume, that is the V2. Now data हमारा मुकम्मल हो चुका, no solution। सॉल्व करते हैं इसे हम। Once again, what we know about the formula, this is the Q is equals to delta E plus P delta V. Okay. Similarly, सबसे पहले क्योंकि हमें V2 मालूम करना है और V2 हमें मालूम है कि हम ये डेल्टा V से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, so basically हमें आखिरकार डेल्टा V हमें मालूम करना ही होगा। okay. So डेल्टा V के लिए once again रिफॉर्म करेंगे फॉर्मूले को हम। This is the delta E plus P delta V is equals to Q. Then, well, this is the P delta V is equals to Q minus delta E. Then, delta V is equals to Q minus delta E, and in the denominator there is a P. Okay. Then what we have to write, हम डेल्टा V मालूम करेंगे, डेल्टा V के लिए वैल्यूज पुट करते हैं।
delta V is equals to the Q. The Q value is plus 600. So this is the 600 minus you have to copy, and the delta E value. Delta E's value is minus 200. So this is what is the minus 200. Okay. And then the value of P, pressure की value हमने मालूम की. This is 25325. This is 25325. Well, the delta, okay, delta V is equals to, यहाँ हम ये बात जान रहे हैं कि माइनस माइनस क्या होना चाहिए प्लस. So this should be 800, and the denominator there is 25325 the value is. So let's find what is the value of the delta V by the calculator. This is the 25325. Okay. Finally, the value is 0.0316. Round off करके लिखा मैंने इसे. So this is the 0.0316. और हमें बात मालूम है कि ये जो इक्वेशन है इससे हमें हमेशा डेल्टा वी मीटर क्यूब में ही हमें मालूम ये आंसर हमें देगा. नो हमने यहाँ पर डेल्टा वी हमने मालूम कर लिया. ओके. हमें अब यहाँ पर मालूम है there is another formula. What we know, the delta V is equals to V2 minus V1. Okay. और हम इस इक्वेशन के मुताबिक डेल्टा V1 हमें ये मौजूद और हम V2 हम मालूम करेंगे. These are the values. So let's check. Firstly, what we can write, V2 is equals to, this should be delta V plus V1. Okay. So this is what is the V2 is equals to delta V. The value is 0.0316 plus 0.15. Okay. इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं. So what is the value? Let me check. This is 0.0316 plus 0.15. Okay, this is 0.18 0.182 राउंड ऑफ किया हमने. इस 0.182 जगह कम हो गई है इसमें. एनीवेज दो, बट द यूनिट शुड बी द मीटर क्यूब. Okay. So this is the final answer. So the V2 is what is 0.182 meter cube. Okay. So this is what is the answer कि इसमें इसका फाइनल वॉल्यूम कितना होना चाहिए. यानी ये जो हमने वॉल्यूम मालूम किया, this volume is 0.182 meter cube. Okay, so this is the answer of this numerical. Thank you very much.